Inactivity serves no purpose whatsoever. ये स्ट्रीम हेलो फ्रोजन वती सब। ये स्ट्रीम कैसा दिखा रहा है रे फ्रोजन? वेलकम टू द स्ट्रीम। अरे अरे लॉल, मैं स्ट्रीम पे आगे मैंने वेलकम ही नहीं किया। स्कैम। हेलो वती सब गाइस। माइनिंग साइट। किस चीज का माइनिंग साइट है ये? अच्छा, ओके। पालवर्ल्ड, ओके। वेलकम टू द स्ट्रीम एवरीवन। गुड इवनिंग। हाउस लाइफ गोइंग गाइस? হাই দিদি, কেমন আছেন? আমি ভালো আছি সুজিত। হাউ আর ইউ? হাই ব্রো। আই সব খেলে কি হবে হইবে? আম, স্বরূপ, এসব খেলে আর কিছু হবে না ভাই। দেখ, তুইও ভ্যালোরেন্ট খেলিস না। यूज टू नहीं, इसलिए अजीब लग रहा है। या आई नो आई नो आई नो, उसका थोड़ा सा अजीब लगेगा। लेट्स ट्राई। अभी यूट्यूब इसको पुश कर रहा है तो ट्राई करने में क्या ही हर्ज है ना? थोड़ा ट्राई करते हैं इसको भी। देखते हैं, हमारा भी थोड़ा यूट्यूब पुश हो गया तो अच्छी बात है। What should I try this time? Try your luck betting on Jade? बाय द वे, कैसा चल रहा है दिन? कैसा गया तुम लोग का? All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. I stand before it, alone and unchanging. गेम में सिनरी नहीं, बस रेडन दिख रही है। हाँ, सिनरी नहीं दिखेगी, रेडन ही दिखेगी। गेम की सिनरी देखने के लिए भाई थोड़ा थोड़ा मुश्किल झेलना तो पड़ेगा। रुक, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, देख, ऐसे में फिट करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में फिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो ना मेरे को रेशियो देख के फिर उसका रेशियो डालना पड़ेगा, समझ रहा है? वो मुझे उसका अलग से रेशियो देखना पड़ेगा। अभी ये मेरे को टेम्पलेट जिसने बना के दिया है, मेरे को उससे पूछना पड़ेगा कि भाई तूने कौन सा टेम्पलेट Inactivity यूज किया। serves no purpose whatsoever. अरे रेडन शोगन चुप हो जाए, इनएक्टिविटी सर्व्स चालू हो जाती है ये। ऊपर से पता है इनएक्टिविटी सर्व्स नो पर्पस और व्हाटसोएवर करके हाँ बोलती है। हाँ, ऐसा ही दिखेगा, कुछ नहीं कर सकते।
should I try this time? टैबलेट वाला रेशियो रख दो जेनी स्क्वायर। देख मैं ट्राई तो वही कर रही हूँ बट ना मेरे को रेशियो नहीं याद है। मेरे को एक बार ही सर्च मारना पड़ेगा। मेरे को पता ना रेडन एटीट्यूड। भाई बहुत गंदा एटीट्यूड है इसका। मजाक से हटके सच बता रही हूँ। अरे ये क्या है? ये कौन सा क्वेस्ट है? मैं कितने क्वेस्ट करूँ? रुक जा, मैं पहले ये वाला करूँगी। कहाँ गया? इसको करूँगी पहले। लैंटर्न राइट इवेंट। ओह अच्छा यही वाला है क्या? अरे ये देख कहीं पे भी चढ़ना शुरू हो जाती है और फिर बोलती इन एक्टिविटी सर्व्स नो फॉर पर्पस ऑफ व्हाटसोएवर चालू हो जाती है। You get what I'm saying, right? कल पता है मेरा वो चला गया। मैं कल वाला डेली मिशन ही किया है नहीं यार। मेरे को पूरे दिन में टाइम नहीं मिला। मैं सोचा कि पालवर्ल्ड थोड़ी देर खेल के जेंशिन खेलूंगी तो एटलीस्ट डेली मिशन हो जाएगा। भाई पालवर्ल्ड में इतना घुस गए, इतना घुस गए, नहीं हो पाया। भूल गए। रात के 1:23 बज रहा था तभी याद आया कि भाई मेरे जेंशिन का मिशन नहीं हुआ है। ब्रो इससे भी ज्यादा एटीट्यूड ये मिको वंडरर का है। व्हाट? वंडरर तो चढ़ाता डायरेक्ट। भाई ये गलत है भाई। इतना एटीट्यूड किधर रखेगा भाई ये लोग? पालवर्ल्ड क्या है? सर्वाइवल गेम है। पाल यानी जैसे पोकेमॉन होता था ना वैसा ही है, बस इसका उसका एनिमे तो नहीं, गेम वर्जन बोल सकता है कि पाल्स यानी पोकेमॉन समझ के चल। ठीक है, उनको पकड़ना है जैसा तू पोकेमॉन वाले कार्टून में होता था वैसे उनको पकड़ना है एंड फिर उनसे फाइट करानी है एंड स्कैवेंजिंग करनी है एंड फिर क्या बोलते हैं बेस बनाना है जैसे यूजुअली सर्वाइवल गेम्स में होता है। बस इसमें ट्विस्ट ये है कि इसमें पाल्स डाल दिया है। समझ रहा है ना? तो पाल्स विल हेल्प यू बिल्डिंग योर बेस। दे विल हेल्प यू लाइक काफी सारी चीजों में कैरी वगैरह करने में वो पाल्स है। हाय क्यूटी, हेलो क्लाउ, व्हाट इज अप, गुड इवनिंग। माइनक्राफ्ट सीओसी टाइप। हाँ नॉट सीओसी बट बोल सकते हैं वन काइंड ऑफ माइनक्राफ्ट बट उसका थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है ऐसा। चिढ़ाता जैसे टंग दिखा के। अच्छा हाँ उसका तो ऐसे वाला एक टंग दिखाता भाई, वो बड़ा क्यूट लगता है भाई वॉल्डरर का। भाई वो सच में बहुत क्यूट लगता है। তোর বাড়ি থেকে লোকনাথ পার্ক কত দূর? আমার বাড়ি থেকে লোকনাথ পার্ক কোথায় আছে ভাই আমি তাও জানি না। আমার বাড়ির আশেপাশে কোনো লোকনাথ পার্ক আছে বলে কি তাও জানি না। তুই আছিস কোথায় আগে সেটা বল। रुक भाई मेरे को थोड़ा घूम के आने दे। आज रात खेलते पालवर्ल्ड। तू खेलेगा? अपना बेस कुछ लेवल 6 या 5 है। मैं और डेडपूल कल जो ग्राइंड किया है ना लिजिट सुबह के 6:30 तक हम दोनों खेले हैं। लिजिट भाई पता ही नहीं चला कब 4 बज गए। उसके बाद मैंने बोला चल 2 घंटे में तेरे को वैसे भी जाना है आंटी को छोड़ने तो तू अभी रह जा, तू खेल ले। আমি ইকো পার্কে। এ ভাই আমার বাড়ি কলকাতা থেকে 200 কিলোমিটার দূর, ঠিক আছে? তুই ইকো পার্ক থেকে ঘুরে নিজের বাড়ি যা, ঘুর। अरे कुछ भी खेल लेंगे। तेरे पास तेरा पीसी आ गया? क्या मैं सही सोच रही हूँ कि तेरे पास तेरा लैपटॉप है अच्छा वाला? मतलब मुझे एक बात बताओ ना, स्ट्रीम लैग कर रहा है कि क्या चल रहा है? क्योंकि मेरे को बिटरेट पे तो थोड़ा इशू दिख रहा है।
थोड़ा बता दो यार। वो क्यूट है, मेरे को कसम से इतना गुस्सा आया ना 50-50 हार के डिलीट के कौन सा एक्टिव कर रहा था। यूरोप अकाउंट में कैरेक्टर स्क्रीन ऑन करते ही टंग दिखाया। ए भगवान, फिर तो गलत क्या। देख भाई, मेरा लक सुनेगा तू, मेरा टट्टी सा लक सुनेगा ब्रो। मैंने कल पुल किया रात को, ठीक है। मेरे को ना ऐसा होता है ना कि कंट्रोल नहीं होता पुल्स करने का। ऐसा स्पिन करना है। मेरे पास 11 स्पिन्स था, ठीक है। मैंने सारे किया, मैंने इसके लिए किया, ठीक है। और मुझे ये मिला। देख, एक चीज तो अच्छा हुआ है, बट मिला क्या है। अरे डिटेल्स में दिखाती हूँ तेरे को, हिस्ट्री में दिखाती हूँ। नहीं, राफ्ट खेलेंगे। राफ्ट मेरा इंस्टॉल करना पड़ेगा फिर। सी ये मिली फारूजान। फारूजान मुझे 2 मिले, ठीक है। एक पुल में 2 फारूजान और जिमिन मिला है ब्रो। ये बहुत बेकार लगता है। अभी यूट्यूब इसी को पुश कर रहा है। अरे मैं क्या करूं निशित। अंडरस्टैंडेबल, टिपिकल ब्रो। मेरा जिमिन C1 हुआ और फारूजान शायद से C3 है मेरी अभी। मुझे बात बताओ, फारूजान का कौन सा कॉन्स्टलेशन रहता है तो उसको तुम अच्छा कैरेक्टर बोलते हो। मुझे अभी ये बताओ, मुझे अभी ये जानना है मुझे। और जिमिन किधर गया। जिमिन मेरा C1 हुआ और फारूजान C3। 2 मिले ब्रो, 2। और उस दिन भी नाहिदा पुल में मुझे 1 मिला था। और तो भाई इसका तो बोलो ही मत। नोएल का तो बोलो ही मत। C4 होके बैठी हुई है। हर बार जब भी पुल कर रही हो ये बैनर्स पे मेरे को यही मिल रही है। नहीं चाहिए भाई तू मेरे को, बस मेरे को पता है स्टैंडर्ड बैनर पे ये मिला है। गोरो दैट्स गुड। C6। अच्छा C6 अभी तो नहीं करने वाली पुल मैं। अभी मैं सेव करूंगी अगले बैनर के लिए। अगले बैनर या फिर उसका अगला वाला बैनर। C6 फारूजान ब्रोकन है कोई भी एनिमो DPS के लिए। व्हाट, सीरियसली। बट अभी अगर मैं पर्टिकुलरली फारूजान के लिए करूंगी ना पुल, मैं बता रही हूँ मुझे नहीं मिलेगी, लिजिट नहीं मिलेगी। जब जिसके लिए पुल करते वो मिलते ही नहीं है। वर्टिकल स्ट्रीम क्यों? वर्टिकल स्ट्रीम अभी थोड़ा पुश हो रहा है इसीलिए बस ट्राई कर रही हूँ रे। इधर नहीं, उधर जाना। अरे 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 रुक जा भाई, स्प्रिंट रुक जा। ये मुझे एक बात बता, मेरी स्ट्रीम अटक रही है क्या? It is just as one expected. The owner of Wanmin Restaurant is indeed a most reasonable and accommodating human. Still, the work here entails dealing with quite a varied group of people. Has this been difficult for you, Shenhe? गोरो, फारूजान, कुजो सारा ये सब इक्वल है, बस C6 चाहिए, बिना C6 गुड। ओके ना ट्राई करे, बेकार लगता है। जेनी इज कंफ्यूज्ड लॉल ब्रो, आई एम वेरी मच कंफ्यूज्ड ब्रो। लिजिट मेरे को वर्टिकल स्ट्रीम नहीं करना था। वर्टिकल स्ट्रीम मैंने सोचा था IRL वाला करूंगी, बट Oh, a sensible plan. One is glad थोड़ी लैग हो रही है। अरे हाँ ना, मेरा बिटरेट का थोड़ा दिक्कत दे रहा है, इसीलिए मैंने पूछा। क्योंकि ना मैं फोन पे जो चला रही हूँ वो मेरा वो हो सर्कल हो रहा है हर 2-3 मिनट में।
one has hardly found the pleasure of one's own company to be lacking. I see. Just as expected of डेडपुल को Master. मैंने कॉल करा, डेडपुल सोया पड़ा हुआ है, अभी तक उठा नहीं। उसने बोला था स्ट्रीम करने से पहले मुझे एक बारी कॉल कर देना। जिस क्वालिटी कम लग रही, क्वालिटी कहाँ से बढ़ती है? तो आई गेस वो तेरा ऑटो उस पे है, नेटवर्क कनेक्शन पे है ऑटो, क्योंकि मैं भी ट्राई कर रही हूँ क्वालिटी। एक्चुअली मेरे साइड से 144 पे देखने के ट्राई कर रही हूँ, बट नहीं हो रहा है, मेरे को ऑप्शन नहीं आ रहा है। आई गेस वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है, या फिर एक काम कर, कोई नॉर्मल वीडियो पे जा, उसकी क्वालिटी बढ़ा तो ना शॉर्ट्स की भी क्वालिटी ऑटोमेटिकली उसी पे रिकमेंड होती है। लाइक अगर तू 144p पे देख रहा है कोई बड़ा वीडियो, तो तू जब कभी भी शॉर्ट्स सेक्शन खोलता है वो सीधा तेरे को 144 पे दिखाता है, तू कितना भी ट्राई कर ले। बट अगर तू उसको 1080p पे देखता है तो फिर वो भी सेम ऐसा शॉर्ट्स पे भी 1080p पे ही वो चालू होता है। हाय हेलो रिवाल कुल्स गेमिंग, वेलकम टू द स्ट्रीम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वेलकम टू द स्ट्रीम। मेरी लैग तो नहीं हो रही, बट क्वालिटी डाउन लग रही। नहीं वाईफाई पे, तो एक काम कर, वाईफाई पे है तो कोई बड़ा वीडियो चला, उसका क्वालिटी 1080p कर, या फिर तेरे को मैक्स जितना भी चाहिए उसका वीडियो का जितना मैक्स क्वालिटी अवेलेबल है उसका कर, फिर तो शॉर्ट्स पे आ देख, शायद काम कर जाएगा। IC 4K में देख क्या तलोल। ट्राई कर, ट्राई कर, ट्राई करने में हर्ज नहीं है। बाय द वे मेरे को गर्मी लग रही है। What kind of device was it? It was a mechanical vehicle made out of iron. What was it called again? Oh, an electro-powered bicycle? Oh, you refer to the bicyclical thunder flashmobile. वही ठंडी खत्म हो गई भाई, गर्मी आ गई। Crafting it. It need only be infused with adaptal energy, and it can cover thousands of miles in one मैंने day. स्वेटशर्ट पहनी है, स्टिल It मेरे को boggles the गर्मी आ रही है। mind why Mooncarver ever supposed he might best me in a contest of locomotion. Though he sprinted with all his might, he could barely keep up. Alas, the one flaw of my mechanism lay in its weakness against ही बोलते हैं ना। terrain. One was thwarted mere seconds from victory. और इसका दूसरा नाम, ये तो कोई अडेप्टे है ना, I guess। Master, that was the end of that story. इसका नाम क्या था यार, मैं भूल Is गई। that so? With you gone, one has seldom felt the desire to call upon those old fossils for another contest. What is a race without spectators, after all? Wind. Have you been lonely, Master? Lonely? At one's age, entire human generations नहीं come and go in क्या the नाम blink था of an इसका? eye. Even one's own self-directed musings can span several days and nights. इसका नाम 'Tis a most foreign sentiment. The mere mention of it is preposterous. सेम क्वालिटी What is the है reason for जी। that look upon your मेरे साथ तो face? नहीं होता, मेरे साथ तो ऐसे ही दिखाता है। मैं कोई बड़ा वीडियो अगर बड़े क्वालिटी पे देखती हूँ, प्रॉपर क्वालिटी पे, तो शॉर्ट्स पे मेरा उसी क्वालिटी पे खुलता है। थोड़ा वेट कर, शायद सही हो जाए। क्वालिटी पे या 720p लग रही, मैं तो 1080p पे They कर are रही हूँ। both, Master. One One finds क्या पता? oneself exalted yet again with sweet words of praise and flattery of a most extravagant nature. You chose to exalt one with your words, yet you refuse to grace Mount Outsong with your presence. This is not to say that your words paint an inaccurate picture. One has always lived by a single ideal. Eschew all action and abide by no rule. One does as one pleases and speaks as one pleases. Others may critique or praise as they see fit, yet one places little weight in such judgments. She got like, what, 2 sentences of flattery from her disciple, and it's as if her ego is about to burst. Do you have any empty tables? टेबल्स तो है, बट खाना किधर Hey है? there, could we get another fish stew?
I'm hearing more guests come in. I should get back to work. 10 है. Alright, good luck with the last 100 kbps की स्पीड ले रही मैक्स स्ट्रीम. I'll try my best. पता नहीं यार. So much yummy food! पता नहीं यार ऐसा है क्या. रावल कॉल व्हाट. क्वालिटी डिपेंड्स अपन योर व्यूअर्स नेटवर्क. वही मैंने बोला रावल कॉल, बट उसका नहीं हो रहा है. वो वाईफाई पे देख रहा है स्टिल, उसको कम क्वालिटी दिख रहा है. 60 to 110 मैक्स. Everything's so tasty! A bit too hot at क्या times, पता but यार. still super tasty. मेरे I'm साइड से तो sorry, सब miss, कुछ but सही है our tables are जितना full. मुझे पता है. मैं रेगुलर जिस जैसे स्ट्रीम करती हूँ सब सेम है. सिर्फ ऐसे करती हूँ अभी ऐसे है. लैंडस्केप में करती हूँ वर्टिकल है बस, और कुछ चेंजेस Well, नहीं है. you could always check with some of the other guests and see if anyone's happy to. Okay, I'll ask around. समझा? क्योंकि मेरे साइड से Excuse सब me? कुछ सेम है. Would you mind letting us share a table with you? There are no empty tables left, so... Ah, well, Paimon doesn't mind. What about you guys? Change from auto to 1080p in settings. You are good to go. Great! Thanks so much. My name is Option Shiru, है and कहाँ? this is my granny, Yuendai. सेटिंग्स मुझे दिख ही नहीं रहा है. ऑप्शन ही नहीं आ रहा है ना उसका. Yep. Is there something wrong with that? No, Paimon's just a bit surprised. She looks so young. Yeah, a lot of people compliment Granny on her youthful looks, but she's actually much older than she appears. एक सेकंड ना. Granny, why don't you take a seat? Come on, it's not polite to stare. Huh. Have we met before? No. Tis a fated meeting, then. Please, take a seat. What would you like to eat, Granny? I can order for you. I want braised earthworms. They always pop up out of the ground after a rainstorm. No, not this again. Granny, there's no braised earthworms on the menu. Braised earthworms? Well, that sounds weird. Do people actually eat that? मेरा वाईफाई हग्गू होता तो 4K वीडियो कैसे चल गई भाई. 4 MB की स्पीड लेते वहाँ. इस बार व्यूअर्स नॉट फॉर स्ट्रीमर. स्ट्रीम सेटिंग्स में 4K कर दिया. रावा कॉल भाई नहीं हो रहा. शॉर्ट में आते ही वापस से लो क्वालिटी. Right, that's what Paimon was Issues. thinking too. इश्यूज ही इश्यूज है. Help? Oh, do you mean with Granny? Thanks, that's nice of you to offer. Granny has pretty bad dementia, so her memory's getting worse all the time. She's always saying things that sound kind of confusing. Actually, her memory's been For bad me ever it's since I was crystal little. clear here. But it's Oh gotten so bad nice. lately that I क्योंकि मेरे साथ भी सेम ही है. मैं मेरे फ़ोन में चेक कर रही हूँ तो उसमें भी सेम ही दिखा रहा है. मुझे क्लियर दिख रहा है जैसा होता है हमेशा. 10 votes and likes कितने हुए? Granny loves me a lot, and I love her a lot too. Sure, it's hard at times, but you just gotta make the best of the life you've got. 6 likes हुए और 10 votes है. ठीक है. ये अलग डेमोक्रेसी क्यों चल रहा है मेरे चैट पे? And me? Oh, what about me? You're tough too, Granny. Plus, you're really gentle. It's from your side, maybe bad network issue. Yes, I don't and know, it's yaar. hardly as if I forget everything. I still remember the important things. I am at Wi-Fi, bhai. Wait, 300 what Mbps was that plan. really important thing again? Okay. I remember now. It was a dream. I had a dream where everything was dark. Someone was standing By the in way, front this of is me. Mr. She Doom. told me to Hello, come Mr. and find Doom. her. Hey, And Mr. that once Doom. I'd found
I would be free. मिस्टर डूम बहुत सुना That सा sounds लग रहा super है. important. But how come you've never told तो me मेरे about चैट it पे आते before? हो मिस्टर डूम. It was just Right. a dream, so I forgot about it. But I'm in a good mood now, Huh? and somehow I remembered it again. ए चार्जर तो पे चलो सॉरी. You know, I believe I've had this dream a great धूम many धूम times. धूm. But just how Huh? many times have I had it? Now Now that I do not remember. Wait, so you have a reoccurring dream where someone's talking to you? That sounds spooky. Yes. Yep. Does that mean you're I possessed? remember. তো বাবা বাজার গেছে নিজে এসব খুলে ঢুকবে আমার এখন ঘুম আসছে हाँ? Unlikely. বাবা বাজার গেছে Her eyes are clear ঠিক and her আছে. breathing remains calm and level. হুম. One sees no signs of আমি possession. শুনতে পাবো না আগে বলে Are দে. you sure? না না ও নিজে খুলে ঢুকবে লাগিয়ে গেছে? Who do you take me for? তাহলে ঠিক আছে. Is one not an adept? Am I not an expert? You're right. Paimon almost forgot you're the expert. In that case, do you still remember what the person in your dreams looked like, Granny? Not anymore. By the way, कैसा चल रहा है तुम लोग का दिन वो तो बताओ. I have बताया a ही नहीं. sense that she looked डूम तुम्हारा कैसा चल रहा है? दिन rather कैसा गया? free. But not as I am now. My younger self. A younger version of Granny? This is just getting weirder and weirder. What is going on here? As one said, fate must have brought us together. You may leave the Cloud situation to Retainer. me. Yes. Are you sure? अभी याद आया इसका नाम Cloud Retainer. So, Yep. what are your names? Paimon's Paimon. अरे भाई इसका इंट्रोडक्शन इतना वियर्ड क्यों है? What is Paimon's Paimon bro? Helios. अच्छा क्या? Oh nice. Thank you all so much for offering to help. Bro, इंट्रोड्यूस करने का ये कौन सा कैजुअल तरीका है कि Paimon's Paimon and here is Traveler. ये क्या है भाई? Helios. Paimon. We're just curious about your situation and want to help if we can. Okay, yes. Thank you so much. You're welcome. मैं थोड़ा स्क्रॉल किया नेक्स्ट दो की तो 144 जैसी क्वालिटी आ रही, उसके बाद अच्छी क्वालिटी आ रही. भाई तेरे साथ पक्का फिर फ्रोजन स्कैम हो रहा है, मैं बता रही तेरे को. That is elementary. Since her dreams portray her younger self, then we shall retrace the steps of her youth. Once we have revisited those places, her memories will likely return. Sounds like a plan. So, Granny, do you remember which places you went to when you were young? Why, of course I do. The heavens above, the earth below, What? the wispy clouds, and the emerald mountain streams. Hello, Granny. Okay, taking that as a no. I might have an idea. Once, when I was really little, my dad told me that Granny used to be a martial artist heroine who saved loads of people from a disaster. If it's Okay. true, then maybe they wrote about it in the history books or something. A martial हाँ, artist heroine? पॉसिबल तो है. Oh, Shinto मे भी knows कुछ tons लोगों about के साथ ही villains ऐसा and हो रहा. legends. अच्छा हाँ, याद आया. मुझे बोला था जिसने मेरे को ये सजेस्ट किया ये वाला करने के लिए, उसने बोला था कि स्टार्टिंग 2-3 दिन में थोड़ा सा क्वालिटी लो आता है बट उसके बाद क्वालिटी अच्छी आने लगती है. ऐसा स्टार्टिंग 2-3 दिन ऐसा स्ट्रीम पर्टिकुलर स्ट्रीम्स की बात बोला. शायद तेरे साथ वो इशू अभी हो रहा है. मतलब इशू तो मेरे साइड से सबके लिए होना चाहिए बट आई डोंट थिंक जो मेरे साइड से हो I रहा है did it इशू. already. बट I'm शायद still hoping. यही एक इशू हो रहा है. आपके MFI है चेक करना. दैट्स व्हाई लो नेटवर्क इशू. ओके, I'll go order अंडरस्टैंडेबल. some food, Granny. If there's nothing on the menu you especially want, I'll just get a few different things. It seems we must part ways for now. The Traveler and Paimon are bound for the Feiyun Commerce Guild. EMF while you क्या and होता I and Shuyu है? shall remain here and partake of their lunch. ठीक है As भाई. for myself, I have matters to discuss with Streetward Rambler. Streetward Rambler? Oh, you mean Madam Ping! Precisely. Let us meet at Yujing Terrace once you are ready. अरे हाँ, मेरे को ऑटो करना था वापस.
Quest completed. अच्छा good. To your heart's content. Today is my treat. अरे रुक जा भाई. पास ही है, चल के चली जाती हूँ. पालवर्ल्ड प्लीज. ओके अंकित वर्मा, पालवर्ल्ड भी खेलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अच्छा ये भी कलेक्ट करके आती हूँ मैं फटाफट. पालवर्ल्ड खेलेंगे खेलेंगे. क्या करूँ मैं, फिजिक्स नहीं पढ़ता, उसमें मैथ्स थी ना. कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है होता है. Ad Astra. Thank you for completing today. मैं Ad कल ये Astra मिस हुई थी Abersoft. मेरी, अब तो नहीं जाने देने वाले. डिस्पैच अगेन. यहाँ पालवल खेलते थोड़ी देर रुक जाओ अंकित. मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ. कल पालवर्ल्ड खेल के मेरा कंट्रोल्स की ऐसी तैसी हो गई है. आपको भी फैस्मो स्ट्रीम नहीं देखे? अच्छा तो फैस्मो वाली ईएमएफ की बात कर रहे हो क्या? ओके 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 ठीक है भाई. बाय द वे मैं आपके साथ पालवर्ल्ड खेल सकता हूँ क्या? एक्चुअली अंकित अभी ना मैंने मेरे सर्वर को प्राइवेट ही रखा है. सो आई एम नॉट अलाउिंग लाइक ऐसे किसी को भी लाइक खेल सकते हो ऑब्वियसली, बट अभी मैं किसी को अलाउ नहीं कर रही हूँ. अभी मैं बस मैं और मेरा भाई ही खेल रहे हैं. ओके 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 सॉरी बट नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर. ओके जब मैं सर्वर ओपन करूँगी सबको लाइक व्यूवर्स को सब्सक्राइबर्स को जब ऐड करके खेला करूँगी तभी आप खेल लेना. मैं थोड़ी देर में आता जेनी, थोड़ा सा काम आ गया. ठीक है चलेगा, आराम से आ जाओ. Huh. It's you two. What brings you here? Jingshu. Shincho! Great, we found you! We wanted to ask you about something. With the situation to Jingshu. Okay. Okay. That's not a whole lot of information to go. I can't pinpoint her identity from your description alone. But considering her age, I am reminded of a nameless heroine who's been featured in various chivalrous Palworld. रुक जा, मैं मेरे भाई को एक बार और कॉल करती हूँ. That's right. नंबर The novels often फिर speak of a अकेले great हंट drought करने from जाना 50 पड़ेगा. years ago. As the people suffered, a nameless फिर heroine वापस रोते appeared बैठेगा. and began to तेरा deal with लेवल evil बढ़ spirits गया and bandits. पाल्स का, All they मेरे को knew मारने was दे. that she always acted alone. Later, though, she supposedly fell in love with a similarly noble-minded exorcist from Mount Tianhe. गाइस अगर नए They आ were रहे हो well matched in एंड more ways than one, अभी तक लाइक नहीं often किया है fighting तो together प्लीज as a लाइक कर fearsome दो duo यार. of otherworldly strength. After the drought ended, the heroine 12 and the वोट है exorcist और left the 7 public लाइक्स है eye भाई. ऐसा and मत began करो living यार, a बुरा reclusive लगता है. life in the mountains. Don't do All this that to me remained were यार. tales of her incredible accomplishments. The way this nameless heroine faded from fame into obscurity later in life is not too dissimilar from Miss Yuenda. Thanks a lot, Shincho. We knew it'd be worth talking to you. Chicho. It's nothing at all. Just something I came across while reading. I did do a bit of extra research on her story, but Why are you it was noob? just Because out of you are a personal noob. curiosity. Well, Paimon still thinks that's super cool. Oh, wait, Shincho, if you've read up on her, do you know of any places off in Asuth? Let me think. By the way मुझे एक बात बताओ, वो स्ट्रीम के लिए फेस कैम चाहिए क्या? बाय बाय. यस. The area just north of Jueyun Coast. मुझे एक बात बताओ, उस स्ट्रीम के लिए आपको फेस कैम चाहिए क्या? Perhaps the real-life heroine who inspired the character was also often seen near those. You're welcome. To be honest, I found some parts of the story confusing when I first came across it. If Miss Yuendai was indeed the original inspiration for the character, जाओ फिर.
She may just be able to help me put the मेरा pieces together. It's स्क्रीन rare for मिरर a करके भी chivalric कुछ नहीं hero to fade पॉसिबल है. into obscurity during their lifetime, even after retiring from the public eye. But no one ever टाइप saw सी or है, heard from the nameless heroine again. वरना फेमस कैसे होंगे? There were even rumors टाइप that सी she है became extremely और ill. मेरे फोन में I've never understood why someone would go to such lengths to वो erase 3.3 themselves from mm public जैक भी memory. नहीं है. सो It's almost as if she was trying मैं to सेट hide करवा from दूंगा. something. आईफोन दिला दो बस. बस There's इवेंट के probably लिए मेरे far को more to आईफोन the भिजवा story दो than घर पे, what's मैं been कर mentioned. लूंगी. मेरे को कोई We'll be दिक्कत sure नहीं to है. tell you if we ठीक manage है. to uncover the truth. That's a deal. Perhaps. गलवा But in the गलो truth भाई, of it सोच all, समझ के there lies a करा story करो more यार. fantastical than any work मेरा of मेन इशू ही fiction. फोन का है भाई. चुप बैठो भाई, आप चुप बैठो. मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, कुछ नहीं पॉसिबल होता. आप अगर इकला की बात कर रहे हो, इकला वाला ट्रिक करने की बात करो, उससे भी नहीं होता. साउंड नहीं जाता है मेरा पीसी पे. एंड क्या बोलते हैं, बस सब कुछ पॉसिबल होगा सिर्फ गेम का साउंड छोड़ के. गेम का साउंड मेरे माइक से People have जाएगा long since developed methods to prevent और them, मैं बिना गेम like साउंड का by खेलूंगी. cultivating the soil or digging canals. So while droughts do happen from time to time, जरूरत ही they नहीं are है. rarely regarded as true disasters. The drought 50 years ago is probably one of the worst we've had in the last several centuries. The crops withered, the streams ran dry, and the monsters in the mountains became rabid and agitated. Countless caravans were attacked, and people who lost their homes came together to form bandit groups. What started as a natural disaster soon became a human tragedy as well. That sounds awful. Yeah. गेम And that's ओवर भाई, exactly गेम why the ओवर ही nameless होगा. heroine ठीक है, was so beloved. वही होगा. She must अब have been आपके someone of उसके true चक्कर में मेरे को integrity जेंशिन to do अनइंस्टॉल so करनी much for the पड़ेगी गेम people फोन while में से. asking बस nothing in आपको return. पता है एक जेंशिन Still, इम्पैक्ट इंस्टॉल करने में as कितना टाइम terrible as लगता that है. drought was, it was nothing नेटवर्क compared to the छोड़ो, truly एमबी calamitous छोड़ो, disasters वो that तो befell this land in ancient times. कोई दिक्कत नहीं है They उसकी. say that बट back आपको in those पता है एक days, जेंशिन इम्पैक्ट disasters इंस्टॉल were करने में both more कितना severe ज्यादा टाइम and more लगता है. common. Only the strongest of Adepti could hope to dispel the ruin and devastation. नहीं, ऐसा नहीं कि आप उसको बैकग्राउंड में डाउनलोड करने छोड़ सकते हो. Do you have any other questions? We're good for now. We're just going to head back and meet up with Miss Yanyan and the others again. गर्मी लग रही है. Paimon hopes that Granny Bandai will be able to remember more of her past. She used to be a great hero who saved many people. So sad that she can't recall any of it. Anyway, we'll be off now. See you some other time, Xingqiu. Thank you so much for your help. It's no problem at all. Safe travels. I wonder if she can see the इदा छोटू करते हैं हम कुछ फोन का. यस, अपना आईफोन मेरे को पार्सल कर दो. Rest assured that she sings top well-being. ठीक है. I see everything. ओके बाय, मैं जाता हूँ स्ट्रीम करना पालवर्ल्ड का लेटर. ओके, सॉरी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. बाय द वे मेरा टॉवल है किधर? मम्मी किधर तो फेंकी? रुको एक मिनट. क्रीम तरारारारारा तुजुजुजुजु. I have recorded the tune that गाइस, अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया स्ट्रीम को, डू मेक श्योर टू लाइक द स्ट्रीम एंड हिट द सब्सक्राइब बटन. थैंक यू. Straight word. आइसक्रीम What has amused you so? तुजुजुजुजु तरारा. Oh, it's no serious matter. I was just reminiscing about the last time I saw you in this form.
ए Time भाई brought such कुछ change in एक this world, हफ्ते से didn't it? टाइमिंग का कुछ पता You क्यों नहीं चल रहा appear कि ये just टाइम the same इससे as ever. फास्ट फास्ट एकदम Time फास्ट has little फॉरवर्ड क्यों bearing हो on रही one's है? existence, nor has one keenly felt its effects whilst dwelling at Mount Outsong. Nevertheless, Ping, one would like to seek your counsel on a personal matter. Oh, why so formal all of a sudden? मैडम पिंग, I ओके. must say, you're making me a little nervous. What is it? Well, the inquiry is as such. Approximately how much mora would one need to afford a comfortable life in the harbor, not unlike the one that you yourself lead? It does not require as much as you may think. Still, do you mean that... Retainer, Madam Ping! What are you two talking about? Nothing save for some trivial matters. Have you unearthed any useful details? Shinto has a theory, but let's save it for when Chuyu and Miss Yundai have joined up with us again. Okay. Okay, Paimon. Paimon got some informations. Do not be troubled, young lady. Here, have some tea. Thank you so— What do you think, Chuyu? Does it match up with what you know of your granny? According to the story, the nameless heroine eventually fell in love with an exorcist from Mount Tianheng. I don't have many memories of him, but there is this one time I found a box in her attic full of a bunch of weird sigils. I think so too. Granny might remember something once she's returned to a familiar place. What marvelous tea. I can taste the dew's sweetness in this cup. It's as if I was taking a stroll in the mountains, thoroughly one with nature and at peace. Is that so? Then please drink as much as you like. There's no need to hurry. At our age, it's always nice to slow down and take the time to appreciate pleasant conversation among friends. Thank you. Okay, Riley, since we have the time, can I ask you something? Sure thing. Well, I have a secret I want to tell you. Let's go talk over there. What's wrong, Shuyu? Well, I've been kind of meaning to ask ever since we started talking in the restaurant, but are you guys all adepti in disguise? Oh! About that. why do you say that? Well, you guys just seem super special. Plus, I think I might have heard Miss Shen Yun call herself an adeptus. Must have been a slip of the tongue. Shen Yun, since you were the one who, misspoke, maybe you can explain to Shuyu here what you really meant by that. One is indeed an adeptus. Is that of some concern to you? Huh? I knew it. Well, one time when I was a little kid, I saw a pure white illuminated crane. I had this super high fever, and Granny wasn't around. I was feeling all icky and gross. But then this snowy white crane flew down from the sky. She put me on her back and flew me to her cool Adeptus house and fed me some sort of magic potion. When I woke up, I was already back in my bed and my fever was gone. I really wanted to thank her, but I was too sleepy to stay awake, so I never got the chance. So I just kind of wanted to ask if maybe any of you have ever met an Adeptus like that? A pure white illuminated crane? The only two we've ever met are blue and white and black and brown. Have you ever met one that's pure white, Cloud Retainer? Never has one met an adeptus with such features. One surmises such a description is but a hyperbolic embellishment that oft results from narrative accounts. That's weird. Was it really just a dream then?
Well, even if it was just in my head, it doesn't matter that much anyway. All I really want is to help Granny recover her memories. I'm really grateful for all your help. Leave it to us! Now that we know the 3 locations, we just need to visit them one by one. Let's go to Wangshu Inn first. Okay, I'll go get Granny. Everyone hold hands. Wangshu Inn. Wangshu Inn. Do you remember this place, Granny? Yes. The fish here is very delicious. And if you look out into the distance, you can always spot a bird that's been left behind by its flock. I believe I used to have a room here. It had a window. Yes, I spent a lot of time looking out that window. I'll come with. Paimon's still having some trouble understanding what she's talking about, but if she's so familiar with this place, that must mean she lived here, right? Whoa! Shell, what are you doing here all this time? You scared the living daylights out of Paimon! I sensed a non-human presence and decided to come take a look. If you're here, then there's likely no trouble afoot. I suppose there's no cause for... It's been a while, Cloud Retainer. I see you have returned to your previous form. I have indeed. I fought alongside her in this form on many occasions during the Archon War. Oh, wow! What was she like during the war? Oh, wait, let Paimon take a guess. Was it anything like this? Behold, the glory of one's newest invention, the Bang Bang Continuous Fire Mechanism. Hands up and surrender, or be prepared to face the full might of the Adepti. An impressive invitation. Bro, Paimon knows her all too well. Even so, Cloud Retainer was not always as ostentatious as you describe. You may be unaware, but her talent with Adepti sigils is just as formidable as her skill in mechanics. The Archon War reached its peak after Guizhong's death. The Cloud Retainer who fought beside me in those devastating battles was taciturn and solemn, only speaking when she had to activate her sigils. A Cloud Retainer who barely talks? Paimon can't picture it. But what happened after that? If you were so powerful in your human form, why did you decide to take up your bird form again? Once one had bid farewell to the world of mortals, what use would one still have for such a shape? When dwelling between mountain and forest, away from the struggles and troubles of the mortal world, a mortal form is hardly the most fitting of choices. After the war, Cloud Retainer retired to Mount Outsong, only revealing herself to the occasional visitor, and always in her avian form. Although I do believe there was an occasion some 30-odd years ago, when she decided to don her human form. I believe it was for the purpose of... One believes there is little need to relive bygone matters. Granny, are you okay? Back then, at this place, Perhaps this conversation should end here. I shall take my leave now. Should you encounter any trouble, you need only call my name. However, given that you are traveling with Cloud Retainer, I trust you. Everyone! I think Granny is finally beginning to remember her... Slowly now.
Calm your mind and recount what has been recorded. A long time ago, I stayed here to recuperate from my illness. Okay. So what Shinto said was true! You did fall ill! Was that why you went into hiding? I don't remember. I'm very sorry, but I can't even remember the name of my illness. The only thing I can remember is that it took a great toll on me, and there was no cure for it. I was confined to my room in Wangshu Inn, where I spent many days unconscious. I'd come to every once in a while and stare at the migrating birds outside the window. It was a solemn sight. I remember crying, but I'm not even sure I knew why. One day, I met a traveling merchant. Upon hearing of my illness, he sold me a bottle of soul-revitalizing tea pills. He told me that the pills were concocted using adepti blood and could be used to alleviate my symptoms. Sure enough, I made a full recovery. My illness remained dormant for several decades after that. Wait, but if your illness remained dormant for several decades, are you saying that what you're going through now is just a relapse of what happened all those years ago? And it was all thanks to the pills that you managed to keep the symptoms in check? Paimon's brain kinda hurts. Do you remember anything else? I'm sorry, I don't. Oh, if only I wasn't so useless. Hey, you're not useless. You've done so much for me. Watched me grow up. Raised me. How could you say that about yourself? Oh, fret not, dear child. Granny was just a bit frustrated. That's all. The recovery of a person's memories is a gradual process. Finding pieces of one's past is always superior to not finding anything at all. Let us make haste to the next location. Next location. Next location. Oh, why don't we go to the area north of Dwayunkars next? There isn't really a landmark there, so where should we start? Oh, Paimon's got it. Let's check out the houses in the area first. After all, if she was there for any length of time, then she would have stayed somewhere, right? Oh, Paimon's really got her thinking cap on today. At this rate, Paimon is a great detective. मानना तो पड़ेगा. Whoa, why are there so many treasure hoarders here? Guess it's time to round up some bad guys. Absorption test. Shine down! Do you remember anything about this place, Granny Wendai? Let me think. I feel like I have been here before. I don't think I stayed here too long. I might have just rested here briefly before continuing on my way. Got it. That's okay. There are still plenty of other places we can check. Wait a second. If I remember Look for the correctly, clues. I believe I brought... Beat all the opponents. Yes, I brought some sweet snacks with me. Go on,
Take some. You need to eat a lot if you want to grow big and strong. Oh, thank you! Then Paimon will help herself. Adventure time! I'm going in! There is no escape! Off we go! Primary ping. Everyone hold hands. मेरे ping bro. पालवर्ल्ड खेल लो क्या ये पिंक के साथ. I see everything. अरे अरे. Everyone hold hands. ये बारिश क्यों होने लगी रे बाप. Please, I don't Anime. remember this place at all. I was thinking. This place feels perfect. Huh? Why a game of hide and... I'm not sure. Maybe it's because I'm not sure I what used... she was saying. I don't remember playing it that much. Are you sure about that, Granny? We only played a few times, and we stopped once we realized I was no good at the whole seeking part. Ah, is that so? Then I must be... Not here then. Let's try somewhere. Let it be. मैं ना वही खेलती हूँ. Palworld. एक काम करती हूँ ये स्ट्रीम बंद करती हूँ फिर दूसरा चालू करते 1 घंटा हो गया ना बस होने वाला है नॉर्मल स्ट्रीम करती हूँ चलो एवरीवन मैं जाती हूँ अभी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मैं नॉर्मल स्ट्रीम में मिलती हूँ ठीक है